Good morning, students. I am Mukesh Mishra, your chemistry faculty at Aakash, and right now I am going to discuss the AIATS Plus mock test state question paper, which was discussed, which was completed on 9th of March. So I will be dealing with the chemistry portion, and basically I am going to discuss the questions that were asked from GOC part, hydrocarbon parts, and haloalkanes and haloarenes part. Good morning, Aman. Okay, so now let's proceed and let's have a look at what were the question asked. But you should be ready with some notebook also, so that you can note down each and every concept which I am going to discuss here. Okay, so some very interesting topic I am going to discuss. Good morning, Sagnik. Hello. Okay, now a very important question that was asked was, which of the following species will not show hyperconjugation? See, here in the question they are asking about will not show. Okay, so whenever you come up with certain question, then you have to first of all underline the facts which they want to know, the most important word that is related in that question. So they are asking that which will not show hyperconjugation. Okay, so but before that we are going to discuss a few points about hyperconjugation. So let's begin. So let's talk about hyperconjugation. First of all, hyperconjugation is basically a stabilizing effect. Okay, it basically stabilizes the molecules, generally carbocations, free radicals, and alkenes. Okay, so that is why those type of species are basically stabilized by them. Now, one more very interesting fact, that it is a permanent effect. And one very important thing which you have to always remember is that, okay, Sagnik, I will come back to the question again, but before that, let's have a quick recap. That it basically involves sigma to pi electron transfer. So it involves sigma electron transfer to pi in empty p orbital. Okay, now basically a sigma bond which is there for carbon and hydrogen, it was carbon hydrogen bond whenever it is near the free radicals carbocations, then the sigma bond is broken down, sigma bond of carbon hydrogen bond gets broken down, and it transfer its electrons to the adjacent empty p orbital of a sp2 hybridized carbon. So that thing actually happens here. Okay, so now one very interesting thing which you have to note down is that basically it is mostly observed in case of carbocations, free radical, and alkenes. So generally they are actually stabilizing effect. They have stabilizing effect on these three mostly. Okay, so now let's have a look that what happens in case of carbocations. Now, if a carbocation is there, okay, if we talk about this, then definitely, see a simple example I am taking, CH3 bond is there, CH3, CH2 plus. Now, if this is there,
Now you can see this carbon is sp2 hybridized and one p orbital is empty here. So the hydrogen, the carbon hydrogen bond from this, the electrons of the sigma bond will be transferred to this empty p orbital and pi bond formation will take place. And so the structure will become like this, double bond, now one thing you have to understand here, that this H plus is always in vicinity. It does not leave this system. So that's why we say that it will still behave as CH3 only. Don't assume that if this bond has been broken then this H plus will be released somewhere else. No, that doesn't happen. There is a very strong attraction which is undergoing in between this pi electrons and this H plus. So you can see here that this has 3 hydrogen available to show hyperconjugation. So one very interesting fact which comes out from here is that more the number of hyperconjugates, more the number of hyperconjugates, higher will be the stability. ओके जितना ज़्यादा हमारे पास हाइपर कंजुगेशन होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी होगी. ओके, गुड मॉर्निंग इशिता. तो यहाँ पर आपको देखना है कि here you have to find out okay how many hydrogen are available for hyperconjugation. You can see 3. If I draw one more structure, then now let's have a look here. If we talk about CH3 plus, so definitely 0 hyperconjugation are there. Okay. If we talk about CH3, CH2 plus, again it has 3 carbon hydrogen bonds available for hyperconjugation. So it has 3 hyperconjugates. If we talk about CH3, CH3, CH plus, okay, now it has 6 hyperconjugates. Similarly, if we talk about tert butyl, CH3, C, CH3, CH3 plus. So this is the case here, 6 hydrogen are there, then here it has 9 hydrogen. So you can see the number of hyperconjugates, hydrogen available for hyperconjugation are increasing. So definitely the stability will also increase in the same order. Okay. So if we talk about the stability order, so the order will be like this. Okay. I hope this thing is clear to all of you. Now similarly, this concept can be applied for free radical also. But one thing you have to remember that in case of carbo anions, we generally don't apply the rule of hyperconjugation, or hyperconjugation is not observed, because in case of carbo anions, the negative charge has already occupied the p orbital of carbon. So that's why that is not available, that is not empty. But in case of free radicals and carbocations, we have empty free orbitals. P orbitals are there which are free. So now let's come back to our question and then we will discuss some more thing. Now, which of the following species will not show hyperconjugation? Okay. Now, here we are talking about carbocations. So in this case, you can see CH2 is there. Again, you can see this structure has 2 hydrogens. And one carbocation is there, empty p orbital is there. So they can very easily transfer their electrons. The sigma electrons can be transferred to form the pi bond, and this will show hyperconjugation. Similarly, if I am talking about this CH2 plus, you can see 1 hydrogen is there. Okay. And what will happen here? This hydrogen will, again form bond here and it will form CH2. So this will also show hyperconjugation structure. Now sometimes students may ask that, sir, why it is not possible that carbon they also have sigma bond? Why don't they transfer their electrons?
So let me tell you one thing, that energy symmetry, energy barrier is there. Okay, symmetrical energy should be there. So that is basically, it has been observed that if carbon hydrogen bond is there, then that will be transferred, that will be most easy for hyperconjugation. Okay, carbon carbon bond requires some extra energy. So this thing is there. Now let's come back to this option number 4th. Now here what happens, that okay, this carbon is sp2 hybridized, this is also sp2 hybridized. So if you look once, then you will find that okay, carbon hydrogen bond is there, but still there will be some problem. But due to resonance, what happens, this electron moves here, okay, this positive charge is here, and now you can see, now it has 2 hydrogen available here, and it can easily form, it can easily show hyperconjugation. So extended form of hyperconjugation is also there in this compound. But if we talk about this one, again, this does not have any hydrogen here, no hydrogen is there. Okay, now no hydrogen is there. Okay, yes, Sagnik, option 2 number, free H donor is surrounded atom of carbocations. Okay, so you can see no hydrogen is there for the hyperconjugation, and instead it will undergo resonance. Okay, this pi electrons will be transferred here to form the double bond. So therefore no hyperconjugation is there. Instead we have resonance. Okay, and if resonance is there, then definitely what can be done here? Will not show hyperconjugation. Option number 2 will be the correct answer for us. Okay, now there again, now a new effect is there, resonance. Resonance and hyperconjugation both are stabilizing in nature. Okay, but resonance, it involves the transfer of pi electrons, it involves the delocalization of pi electrons. Okay, so resonance is one more very important phenomena. And now let me tell you one thing, one very interesting fact. Generally it has been observed that resonance dominates in comparison to hyperconjugation for stability. Okay, so if 2 compounds are stabilized, one has been stabilized by resonance, one has been stabilized by hyperconjugation, then we generally say, okay, then we generally say that in that case we generally say that resonance effect dominate. But one very interesting fact is that this tert butyl carbocation is still dominant than more dominant than benzyl carbocation. Okay, so an interesting fact. This is your tert butyl carbocation. सर प्लीज़ एलिमेंट्स क्या होता है बता दीजिए, सॉल्वेंट या मिक्सचर जिसको हमें प्योरीफाई करना है। एलिमेंट जनरली वो चीज़ें जो बाहर आती हैं ना क्रोमेटोग्राफी कॉलम से, उनको हम लोग कहते हैं। ओके, तो आपको जिन चीज़ों को प्योरीफाई करना होता है वो जब बाहर आते हैं तो उनको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, फाइनली चलो, तो ये हो गया आपके पास टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। फिर इसके बाद नाउ अब आप देखें तो स्टेबलाइज्ड बाई, इट इज स्टेबलाइज्ड बाई नाइन हाइपर कंजुगेट्स, 9 हाइपर कंजुगेशंस आर देयर। ओके, देन इसके बाद अगर हम बात करें बेंजाइल की, तो इट इज स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेंस, ठीक है, यस साग्निक। तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन, यस, बट
9 alpha hydrogen, they have so much of stabilizing effect, so much power that they can even exceed the stability of this benzyl carbocation. Okay, so therefore this is more stable. तो ये जनरल हम स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑब्जर्व करते हैं, जो बच्चों को कई बार नहीं पता होता, क्योंकि आप लोगों ने कई बार स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में सिर्फ सिंपल याद करके रखा होता है कि बेंजाइल देन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देन राइल, तो इस तरह से नहीं होता है. टर्ट ब्यूटाइल इज मोर स्टेबल देन योर बेंजाइल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 9 अल्फा हाइड्रोजन. इज दिस क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां तक? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. Okay, now hyperconjugation has a very important role in case of alkenes also. अब stabilizing effect in case of alkenes हम देख लेते हैं, जैसे CH3 CH double bond CH CH3. So this is butene. Okay, और अगर हम बात करें ये है ब्यूट-1-इन. अब इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? डेफिनेटली वी कैन सी दैट इट हैज ओनली 2 हाइपर कंजुगेशन, दिस वन, बट हियर इट हैज 6 हाइपर कंजुगेट्स. सो डेफिनेटली ब्यूट-2-इन इज मोर स्टेबल देन ब्यूट-1-इन. गुड मॉर्निंग जीनिया. एग्जैक्टली, ब्यूट-2-इन इज मोर स्टेबल. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. नाउ हाइपर कंजुगेशन किस तरह से ऑब्जर्व होता है? यस, ये देखते हैं. लेट अस सपोज इन केस ऑफ एल्कीन दिस इज योर CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, सिंपल एल्कीन इज हेयर. यस, 6 अल्फा इन. यहां पे देखो ध्यान से, CH3 इज देयर, देन okay, now this type of transfer will take place and we will get, because of this hyperconjugation, we are going to get C double bond CH CH2 minus. Okay, and this will be H2 and here H plus. So this is how hyperconjugation takes place in alkenes. Okay, सिमिलरली फ्री रेडिकल्स में भी स्टेबिलिटी ऑर्डर इसी तरह से फॉलो होता है. फ्री रेडिकल्स आर ऑल्सो स्टेबिलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं. लेट्स हैव अ लुक. एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, फ्रॉम योर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. तो जो बच्चे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करते हैं इसको ध्यान से देखें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ कि किस अप्रोच से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द सल्फर एस्टिमेशन. सो द क्वेश्चन सेज दैट इन सल्फर एस्टिमेशन 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.699 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट. द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड इज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट हैज बीन गिवन टू अस, इट इज 233. Now first of all you have to understand the basic process that is involved in the estimation of sulfur. Now first of all I am going to discuss that process. Suppose we take an organic compound, okay, which contains sulfur. Okay, any organic compound which contains sulfur. So first of all, in Carrier's tube we are going to take this compound, and in Carrier's tube it is treated with sodium peroxide or fuming HNO3, and what happens when it is heated with them? The sulfur will convert to H2SO4. Now remember, the sulfur has been converted to H2SO4. Now after this we are going to treat it with barium chloride, and then we get barium sulfate precipitate. Okay, so all this reaction is taking place in our Carrier's tube only, and this barium sulfate, it basically precipitate. So what happens actually here is that
all the sulfur that was present in the organic compound finally comes out in the form of barium sulfate. Now, if we can find out the amount of sulfur that is present in this barium sulfate, then definitely we can very easily find out the amount of sulfur that was present in the organic compound. Okay, and if we know the mass of that organic compound, and then from that mass of the organic compound, we can divide that mass by the mass of sulfur which is there in this barium sulfate multiplied by 100, we can get this percentage composition. Now, very important thing which we have to keep in mind is that trick here is that in such questions which are related to Carrier's tube method for the estimation, you have to follow the unitary method. Okay. Now, how we are going to solve this? You can see here that we know that molecular mass of barium sulfate is 233 U. And in this barium sulfate, there is one sulfur and its mass is obviously going to be 32 U. Okay. So, we can say that 233 gram of barium sulfate has sulfur equal to 32 gram. Okay. Now, in this question, they have given us how much barium sulfate we have obtained. Okay. So, unitary method we have to apply. So, 1 gram of barium sulfate has sulfur that is equal to 32 by 233 gram. Okay. So, now this is the actual amount of sulfur which is present in 1 gram of barium sulfate. But how many gram of barium sulfate we actually obtained? 0.699 gram. So, we have to multiply this by 0.699. So, 0.699 gram of barium sulfate has sulfur equal to 32 by 233 into 0.699. So, this is the actual amount of sulfur that was present in this 0.5 gram of sulfur. So, this is how you have to find out that mass of sulfur we have obtained. So, percentage of sulfur that is equal to mass of sulfur in the organic compound by mass of organic compound multiplied by 100. Okay. Now, what will be the answer here? We have mass of sulfur that is 32 into 0.699 divided by 233. Now, this will be multiplied with mass of organic compound. So, 0.5 multiplied by 100. And in return, what you are going to obtain, you will definitely on solving this. Now, 0.699 699 32 into 3 by 5. So, that will be 19.2%. So, this is how unitary method actually helps you to estimate the problems that are related to Carrier's tube method for estimation of sulfur, halogen, and even for the phosphorus. So, this thing you have to keep in mind. Now, let's move on to the next question. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरोमेटिक स्पीशीज अमॉन्ग द फॉलोइंग इज. सो नाउ स्पीशीज हमारे पास कई तरह के हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक. ओके. सो फॉर एरोमेटिसिटी लेट्स डिस्कस सम रूल. ठीक है. तो अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है? मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर. सेकेंड रूल इज दैट ओके अंकुल. नाउ यहाँ पे देखो दो बच्चों ने अलग अलग बोला. अंकुल का कहना है ऑप्शन 2 और साग्निक का कहना है सर ऑप्शन 3. चलो अभी हम देखेंगे. नाउ प्लेनर होने के बाद कंप्लीट डीलोकलाइजेशन
ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा. देन थर्ड इज इट शुड फॉलो हकल रूल, मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर. ओके, तब हमारा ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा. ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वेयर n इज इक्वल टू, n कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2, मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बट इट कैन हैव 0 1 2 3 एनी वैल्यू. बट इफ इट हैज 4n+ पाई, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ठीक है, और यहां पर n इक्वल्स टू 1 2, मीन्स 0 नहीं होगा. ओके, तो यहां पे 0 नहीं होगा. Okay, so if this 4n+ pi electrons are there, then such compounds are anti-aromatic. Okay, जबकि ये जो रूल फॉलो करेगा they will be aromatic. If neither aromatic nor anti-aromatic, in that case those compounds will be called as non-aromatic. तो तीन तरह के हो गए, aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. Now let's have a look at this question. Aromatic species among the following is, अब देखो यहां पर ये cyclic. Okay, complete delocalization of electron is also there because they are complete cyclic resonance. If you apply 4n+ pi, 4n number of pi electrons equal to 8, तो n equal to 2. ओके, ये होगा. यहाँ पे हमें देखने में लग रहा है कि ये एक बार में देखने को लगता है कि अरे ये तो हमारे पास इस रूल को फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक वाले को. यस और नो? बट यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, दैट मॉलिक्यूल शुड बी कंप्लीटली प्लेनर. ये फर्स्ट रूल है. एग्जैक्टली ये फर्स्ट रूल को ही वायलेट कर देता है. कार्बन के नंबर इतने सारे हैं कि ये ऐसा नहीं होता, इट इज एक्चुअली टब शेप्ड. इस तरह का होगा, मीन्स प्लेनैरिटी ही नहीं है. तो प्लेनैरिटी नहीं है तो फिर तो बाकी की तो बातें ही नहीं करनी हमें. ठीक है, so if planarity is not there, then definitely this molecule is actually non-aromatic. Okay, now let's have a look at this structure. यहां पे ध्यान से देखो, 7 membered ring. Okay, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर. अच्छा, ये एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाते हैं. ओके, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि यहां पे प्लस चार्ज आने की वजह से नाउ यू कैन सी कंप्लीट प्लेनैरिटी इज देयर. कंप्लीट प्लेनैरिटी इज देयर, सो देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल विल बी, now it will follow complete planarity is there, complete delocalization of electron is there, and 4n+2 equal to, how many electrons, 6 electrons are there, and n equals to 1. So definitely this one is aromatic. Okay, if we talk about this, then generally अगर हम यहाँ पे shift करना चाहेंगे तो oxygen is more electronegative, so it is not going to release its electron. So definitely it will gain electron and it will develop positive charge here, and due to this again this will follow 4n+ pi. So again this will become anti-aromatic. aromatic नहीं हो सकता ये. अगर हम इसकी बात करें तो again 4n यहाँ पे भी आप देखो this is in resonance complete,
4n equal to pi 4, so n equal to 1. Again, this one is also anti-aromatic. So option 2 will be the correct answer. Anyone having any doubt here? You are free to ask. तो क्लियर हो गया मिस्टेक कहाँ पे थी? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एरोमेटिक स्पीशीज़ के बारे में हम लोग ज़्यादातर इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज एरोमेटिसिटी ये कंपाउंड्स को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 दे एक्चुअली इजिली रिएक्ट विद योर एलिफेटिक हाइड्रोकार्ब्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बट विद बेंजीन दोज एडिशन रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस दैट मच ईजिली. रीज़न उसका क्या है? रीज़न इज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, बेंजीन बीइंग एरोमेटिक बिकम्स एक्स्ट्रा स्टेबल. तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ हमें जानना है. इसीलिए हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को एक अलग क्लास में स्टडी करते हैं क्योंकि उनका जो केमिकल बिहेवियर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है. नाउ लेट्स कम बैक टू वन मोर क्वेश्चन हियर. गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट अबाउट सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ ब्यूटूइन. ओके, नाउ ब्यूटूइन के सिस और ट्रांस आइसोमर की हम बात करते हैं. ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था, CH3, this is your cis butene, ओके. और फिर अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है तन्मय, वो हम एक्सपेरिमेंट से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से इजीली पता लगाते हैं. तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एरोमेटिक आर मोर स्टेबल एंड एंटी एरोमेटिक आर लीस्ट स्टेबल. ठीक, चलिए यहाँ पे देखो ब्यूटूइन, ट्रांस ब्यूटूइन. नाउ दे आर बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ओके, नाउ सिस फॉर्म इज मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर्स. चलो हम देखते हैं यहां पे अगर पोलैरिटी की बात करें तो दे विल हैव नेट म्यू इस डायरेक्शन में, अगर मैंने इस तरीके से सिस को बना रखा है तो. ठीक है, फिर अगर हम इसमें बात करें तो इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्म they are going to cancel out each other. Dipole moment is basically, bond polarity is basically vector addition takes place there. Okay, and when in case of vector addition, opposite, if they are acting in opposite direction at 180 degree, then they both cancel out each other because their magnitude is equal, so they will have resultant equal to 0. So यहाँ पर mu equals to 0, and as mu is 0, cis form is more polar than trans form. This is absolutely correct. Okay, now let's come back to the next new point. B, dipole moment of trans form is 0. Dipole moment of trans form is 0. We have seen here. Yes, this one is absolutely correct. Okay, now they are saying that melting point of cis form is higher than trans form. Now this is a very good statement here. Generally you all have studied that boiling point, they are actually, boiling point increases with polarity because dipole-dipole attraction is there. So if you talk about boiling point, then boiling point of cis will be more than trans. Okay, reason because dipole-dipole attraction will take place here. But when it comes to melting point, initially it is in solid state and then it converts to liquid state. So in case of solid, you can see in case of trans butene, more amount of symmetry is there. Okay, it has more symmetrical structure. So good fitting takes place in case of solid. So if it is present in solid form, then you will require more heat to melt it. So trans has more melting point. Okay, but cis has higher boiling point. This thing you have to remember. So these two are actually opposite in nature here. So they are saying melting point of cis form is higher than trans form. So melting point is not there.
Okay, boiling point of cis form is higher than trans form, not the melting point. Due to this, what happens that we have correct option as A and B only. So option 3 suggests for the same. Anyone having any doubt? Feel free to ask. Okay, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है. कई बार बच्चे इस पर गलती करते हैं क्योंकि उन्हें याद रहता है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों को वो डाइपोल अट्रैक्शन से याद कर लेते हैं और वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है. बट ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं. नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. You can see here chlorine, and then on second and fourth position, ortho and para position, we have NO2 group is there. So they are electron withdrawing in nature. Now NaOH has been transferred, then 100 degrees Celsius, H plus and H2O is there. So here you have to understand one very important fact that haloarenes, they do not undergo substitution nucleophilic reactions easily. Okay, there are various reasons for that. आपने सबने पढ़ रखा होगा, NCERT में ये चीज़ें लिखी हुई हैं. One of the very important reason is because of the resonance, partial double bond character arises and nucleophilic attack is not much possible. Okay, but अब एक बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ही important point. केमिस्ट्री में हमारे पास दो बहुत important tools हैं, टेम्परेचर और प्रेशर. तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि कि हमारे पास कि हम कुछ कर नहीं सकते, कोई केमिकल रिएक्शन होगी नहीं. हो सकता है रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्शन ना हो, बट हम उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन करवा सकते हैं, या फिर लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे कुछ भी करके आपको ऐसी कंडीशंस डेवलप कर सकते हैं. इसीलिए केमिस्ट्री में इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी और ज़ीरो नाम की चीज़ें नहीं होती हैं. ठीक, चलिए. तो अब यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने ये तो पढ़ रखा है कि हेलोएरीन्स होंगे, दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस इजीली, बट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगा करके हम उसको अचीव कर सकते हैं. यहीं पे देखो, सिंपल अगर क्लोरीन होगा, फर्स्ट आप इसको NaOH से ट्रीट करो. ओके, बहुत हाई 623 केल्विन, और 300 ATM प्रेशर. ओके, इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर आप ले सकते हैं. ओके, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इवन एलिमिनेशन थोड़ी होगी यहाँ पे. यू विल रिसीव फर्स्ट ONA, और फिर जब इसको H प्लस से ट्रीट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट फिनॉल. फिनॉल विल बी प्रोड्यूस्ड हियर. ओके, तो ये देखो, बट यहां पर द क्लोरीन, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन आर प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. सो इफ we keep on increasing the electron withdrawing group at ortho and para position, this harsh condition will be ये जो 623 केल्विन का हमने हाई टेम्परेचर दे रखा है, 300 ATM का प्रेशर दे रखा है. ओके, डॉज प्रोसेस सही ना सुल्ताना, स्पेलिंग रॉन्ग है, DOW''S, डॉज प्रोसेस. ओके, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरह की रिएक्शंस पॉसिबल हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे. ठीक है, तो जैसे जैसे हम इफ़ वी इंक्रीज द एड अ ग्रुप विच आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, the tendency for the nucleophilic reaction for haloarenes increases. और जैसे ही आप एक NO2 लगाएंगे, then आपके NCERT में लिखी हुई है सारी रिएक्शंस, उसके बाद प्रेशर का रोल खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर भी 468 केल्विन पर आ जाता है. और ज़्यादा हमने लगाया 423 केल्विन के आसपास आ जाता है. एक और हमने NO2 ऐड कर दिया यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, तो उस केस में जो हमारे पास सिचुएशन आती है, प्रेशर का रोल अब खत्म हो चुका है क्योंकि दो NO2 ग्रुप आ चुके हैं. तो वहाँ पर हमारे पास हमें जो सिर्फ टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 368 केल्विन टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हमारी हो जाती है. और अगर हमने 3 जगह लगा दिए,
सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ, अगर 2, 4, 6 नाइट्रो कर दिया, यू जस्ट नीड वार्म वाटर, क्योंकि काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आ चुके हैं. जस्ट नीड वार्म वाटर में डालो, वेरी इजीली द रिएक्शन विल टेक प्लेस. शगुन शर्मा, यस, टेम्परेचर डिक्रीजेस. ओके, तो ये चीज़ हमें बताती है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप increases the tendency for nucleophilic substitution reaction in haloarenes. Now let's come back to our question. First NaOH 100 डिग्री सेल्सियस, 2 NO2 है, मैंने बताया था. तो यहाँ पे 2 NO2 एज इट इज रहेंगे, ONO बनेगा पहले और फिर ONO, it will react with H plus and H2O and form phenol there. So fourth will be the correct answer. Is this clear? चलिए, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आप सबको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज related to practical chemistry is your Kjeldahl method. Okay, many students have certain problems with this concept, but I am going to explain this concept in a very concise manner, and you have to look at the question that how I am going to solve it. And first of all, we are going to understand the basic principle behind the Kjeldahl method. Now have a look here. In the question, during estimation of nitrogen present in an organic compound by Kjeldahl's method, the ammonia evolved from 0.2 gram of the compound is neutralized by 10 ml 0.1 molar H2SO4. The percentage of nitrogen in the organic compound is. So Kjeldahl method is very important here. First of all, we are going to understand that how this Kjeldahl method, what are the reactions that are taking place in the Kjeldahl method, and what is the principle that is behind it. So okay, now so for Kjeldahl method, if we have an organic compound which contains nitrogen, organic compound containing nitrogen is there. Now this is allowed to react with concentrated sulfuric acid. So once it is treated with concentrated sulfuric acid, all the nitrogen is converted to ammonium sulfate, NH4 whole twice SO4. Now this ammonium sulfate is treated with NaOH. Okay, so now due to this, upon treatment with NaOH, what is going to happen? Ammonia is released. Now this released ammonia is titrated against the known concentration of H2SO4. Okay. Now try to understand that the ammonia has been formed due to the nitrogen that was present in this organic compound. So amount of nitrogen ammonia produced will be related to the amount of nitrogen that is present in the air. Now once it is titrated against the known concentration of the H2SO4, what we are going to get, we can very easily find out the value, the amount of ammonia that has been released here. And once we are able to find out that ammonia, then we can understand that a certain amount of nitrogen, that is present in this ammonia is coming directly from this. So very easily we can calculate this. Now let's come back to the question. This is the basic principle, but during the solving the question, you have to apply certain different method. So the simple trick for this is that you have to follow again unitary method for the estimation. Now see, during the estimation of nitrogen present in an organic compound by Kjeldahl method, the ammonia evolved from 0.2 gram of the compound. So we have taken 0.2 gram of organic compound. Organic compound is 0.2 gram. Now this organic compound, this 0.2 gram will contain certain amount of nitrogen. Once it is allowed to react with concentrated H2SO4, the nitrogen will be converted to ammonium sulfate.
so the nitrogen present in this 0.2 gram. That will produce ammonium sulfate, and that ammonium sulfate will be reacted with NaOH to produce ammonia, and again this ammonia will be titrated. So now what is going to happen here? It was found that the ammonia produced is neutralized by 10 ml of 0.1 molar H2SO4. So this is the amount of H2SO4, concentration of H2SO4, which is there for neutralizing the ammonia produced. So we can very easily equate it, and we can find out that how much ammonia will react with this amount of H2SO4. Try to understand the fact that, if you look at the balanced chemical equation, then ammonia react with H2SO4 and forms ammonium sulfate plus H2. Okay, this is produced. You have to balance it. So, this thing is there. Okay, now one thing very clear with this is that 1 mole of H2SO4 is basically reacting with 2 mole of ammonia. Okay, so it means if we have been given 10 ml of 0.1 molar H2SO4, it simply means that it can react with 10 ml of 0.2 molar ammonia, means double moles of ammonia should be there. Or you can take it as 20 ml of 0.1 molar ammonia. So if we talk about like this, that 10 ml of 0.1 molar H2SO4 reacts with ammonia, that is equal to 20 ml of 0.1 molar okay, so 20 ml of 0.1 molar ammonia. फॉर्मूले इतने ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. You just have to follow unitary method. Okay. Now, try to understand this fact that 20 ml of 0.1 molar ammonia is there, and in 1 molar ammonia we know that 14 gram molar mass of ammonia nitrogen is 14, and for ammonia 17. So by some basic concept of chemistry, you all have studied that out of 17 gram ammonia, 14 gram will be of nitrogen. So 0.1 molar simply means that in 100,000 ml of the solution we have how much ammonia will be there? 1.7 moles of ammonia will be there in 1000 ml. So from this we can easily say that in 20 ml how much nitrogen will be there? Try to understand it clearly. This is the basic most important step for this reaction. Amount of ammonia, okay, or you can simply say amount of nitrogen now. So 0.1 molar ammonia, so 0.1 molar ammonia has 1 mole ammonia has 14 gram, so 1.4 gram of ammonia is present in 1000 ml. So divided by 1000, and how many ml of ammonia is there? It is 20. So multiplied. This will be the amount of, you have amount of nitrogen that will be there. Now, this whole amount of nitrogen was basically present in the organic compound. So percentage of nitrogen equal to 1.4 into 20 by 1000 multiplied by 0.2 into percentage, that is 100. On solving this, what we are going to get? (1.4 by 0.2, 2 into 2, that is 14%. So this is your correct answer. Yes, uncle. So you have to follow the unitary method for the proper estimation, for proper solving of such questions, whether it is from Kjeldahl method, Kjeldahl method, or for Dumas method. Okay. Next question की तरफ हम आते हैं. One more very important question,
क्वेश्चन अराइजेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. Kjeldahl method for estimation of nitrogen is not applicable for. Now, in the case of Kjeldahl method, it was very important that the formation of ammonium sulfate should take place. And as you can see here, that if ammonium sulfate is not formed, then we cannot use Kjeldahl method. And it has been observed that for azo compound, for nitro compound, and nitrogen which is present in ring, ammonium sulfate is not formed. So therefore, such compounds do not estimate, nitrogen is not estimated through Kjeldahl method. So Kjeldahl method for estimation of nitrogen is not applicable for. You can see nitrogen is present in ring. So this is there. Again here nitrogen is present in ring. NH2 is there. So this will, Kjeldahl method will be applicable for this. Benzene and NO2. Nitro group is there. Again this. So 1, 2 and 4. So we can very easily say that option number 4th, that is 1, 2 and 4 are the correct. Yes, Granthali. 1, 2 and 4. Azo compounds, they also do not react with concentrated sulfuric acid to form ammonium sulfate. And reason for this is that, they have, actually azo compounds are stable at very low temperature. So therefore, this thing is there. Chalo. Now let's move on to the next question. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. So assertion says that benzyl chloride and chlorobenzene can be distinguished by using alcoholic AgNO3. Yes, this statement is true because in case of benzyl chloride, what is going to happen? Benzyl chloride will react with AgNO3 and chlorine will be released and AgCl will be precipitated. But here in reason they are saying chlorobenzene gives white PPT. No, for chlorobenzene, the breaking of AgCl carbon halogen bond is not that much easier. So assertion is true, but reason is false. So option 3 is going to be the correct answer. Okay. Now, let's come back to the next question. Now, this Dumas method is also very important. And what is going to happen here? In Dumas method, for estimation of nitrogen, 0.25 gram of an organic compound gave 30 ml of nitrogen and collected at 300 Kelvin temperature and 715 mm of pressure. Okay, the percentage composition of nitrogen in the compound will be. आप लोगों के NCERT में जो बहुत ही important ये discussion किया गया है Dumas method का, उसमें एक मेथड दिखाया गया. मैं यहाँ पे जो आपको मेथड बताने वाला हूँ वो उससे बिल्कुल अलग मेथड है, ईजियर है, क्योंकि उस मेथड का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले हम दुमास मेथड को समझते हैं. दुमास मेथड में होता क्या है? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज अलाउड टू पास थ्रू कॉपर ऑक्साइड गेज. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की पूरी चैम्बर होती है, उसमें हम इस कंपाउंड को पास करते हैं. एंड व्हाट हैपेंस दैट कार्बन इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, hydrogen is converted to water and nitrogen is converted to N2. ठीक है, उसी सीरीज में कई बार NO भी फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, तो उसी सीरीज में एक कॉपर गेज भी सिंपल होती है, वो कन्वर्ट कर देती है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को N2 में फाइनली. सो हमें जितना भी नाइट्रोजन चाहिए होता है वो सारा का सारा कहाँ आ गया? वो सारा का सारा नाइट्रोजन के फॉर्म में आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड से. अब अगर हम इस गैस को हम पास करते हैं KOH के मिक्सचर के थ्रू, और KOH के मिक्सचर के थ्रू पास करने पर जो ट्यूब में हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं. लेकिन KOH के मिक्सचर से जब हम पास करते हैं सॉल्यूशन से, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है. और एक हमारे साथ प्रॉब्लम ये आता है कि जो गैस होगा, ओके, गैस प्रेशर होगा, वहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन भी होगी और वाटर भी होगा. ओके, तो वाटर की भी एक अपनी वेपर प्रेशर होता है. तो यहाँ पर जब हम इसको इस ट्यूब के ऊपर कलेक्ट करते हैं KOH सॉल्यूशन के ऊपर बबलिंग करके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और H2O दोनों का मिक्सचर होगा वेपर का. नाउ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो हमें पता होता है कि हर एक वेपर प्रेशर हर टेम्परेचर पे कितना होगा. जिस टेम्परेचर पर हम अपनी रीडिंग को कर रहे हैं, वहाँ से हम वाटर का यहाँ पे टोटल प्रेशर हम मेजर करेंगे, और टोटल प्रेशर में से
हम प्रेशर ऑफ H2O माइनस कर लेंगे, जिसको हम एक्वस टेंशन कहते हैं, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, जो कि एक्चुअली यहाँ पर हमें ऑब्जर्व होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत है. नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन हियर. In Dumas method for estimation of nitrogen, 0.25 gram of organic compound gave 30 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 715 mm pressure. अब ये देखो, जब भी हम टोटल प्रेशर को मेजर करेंगे 715 mm, तो ये हम हमेशा टोटल प्रेशर को मेजर कर पाते हैं. तो हमारे पास टोटल प्रेशर हमें दे दिया गया है 715 mm Hg. ओके, नाउ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड विल बी. यहाँ पे देखो एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन, यहाँ पे मैंने बताया ना टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल होता है एक्वस टेंशन. तो हमें पता है कि वाटर वेपर का प्रेशर 15 mm है. तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 715 माइनस 15, दैट इज 700 mm Hg. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एनसीईआरटी में यहाँ पर P1 V1 T1 करके हमें इस कंडीशन में P2 V2 T2 से हम इस फॉर्मूले को STP से रिलेट करके निकालते हैं, बट यहाँ पे ट्रिक ये है कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला. हम क्या यूज करेंगे? PV इक्वल टू NRT, क्योंकि सारा का सारा नाइट्रोजन का मोल्स अगर हमें मिल जाएगा तो हमारे पास हमें उसके मोल्स के बाद मास भी मिल जाएगा, और वहाँ से हम परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के कितने होंगे? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, RT. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे mmHg में है, तो mmHg को हमें ATM में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो प्रेशर 700, आप अगर इसको 760 से डिवाइड कर दें तो यू आर गोइंग टू गेट द प्रेशर इन केस ऑफ ATM. वॉल्यूम हमारे पास है 30 ml, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 ml हमने ऑब्टेन किया. R, क्योंकि ATM हम यूज कर रहे हैं, तो ATM के केस में R की वैल्यू होती है 0.0821. ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको. और टेम्परेचर हमारा गिवन है 300. जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, नाइट्रोजन के मोल्स हमारे पास आ गए. नाइट्रोजन के मोल्स में, क्योंकि N2 का फॉर्मूला है, इसमें हमने 28 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास मोलर मास आ गया नाइट्रोजन का. ओके, मोलर मास आने के बाद हम इसमें, अब ये सारा का सारा नाइट्रोजन, ओके, हमें 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिला. तो परसेंटेज ऑफ N ये कितना हो जाएगा? 700 बाई 760 इंटू 0.0821 इंटू 30. ये 28 मैंने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लिखा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको 28 नहीं रखना है, ये यहाँ पे हो जाएगा 28. अब टोटल कम मास कितना था हमारे पास? जैसे टेम्परेचर 300 भी मल्टीप्लाई कर ले, टोटल मास था हमारे पास 0.25 और इसमें 100 मल्टीप्लाई कर लो. बस इसको सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट योर करेक्ट आंसर एज 12.57%. ओके, सो दिस वाज एनफ फॉर Dumas method. So that's all for today. Have a great day ahead and be ready for the next session. Thank you very much.